everyone, this is Giovanni and welcome to Latin Reaction one more time. Here is my cousin Claudia. Hi guys, this is Claudia again. And yeah, I'm here with Giovanni, as he already said. I'm happy, he's my cousin. And we are not watching a movie for a really long time. Yeah, more than 6 months, I believe. Yeah, I think even a little bit more than that. We watched KGF. Yeah, that was cool. Yeah, and KGF 3 is coming, and I don't know when will come, but for sure you have to react with me the KGF 3. Of course, I'm waiting for it. Yay! So, well, I decided to watch this movie because I know that he will love it. Okay, this movie is called Rocketry, and he's too much into science. Okay, so I think that I'm completely sure that he will love it. And I was curious about it since the time I watched the teaser, the trailer. So finally we had the time to watch this. Actually, guys, this movie was pending, and many movies like this, Giovanni, I want you to watch. So it's really important for Indian development, okay, in a scientific way. So let's see how it's going to be. But let me tell you, this is for real life. It's the struggle of how scientists, the struggle the scientists have to pass through to develop what you are gonna see. That I don't want to tell anything. Okay. So let's go for that, guys. So there will be moments that also I will be explaining some part. I will be pausing and explaining to you so you can get some other context for it. Okay. And there are some research also that I have made. So I will be saying it in the correct time. Thank you. Now let's go and watch because I'm really excited for it. First, I have to show my clothes. What happened is that I love it so much and I think you guys have not seen it. So if I stand up, I'm not sure you are gonna see it, but I will try, okay? Check. Yeah. So it's an amazing color. I love it. Also, I like my shirt. Yeah. Oh god, yeah. It's a Star Wars. So guys, okay. There's nothing else to say. Only that don't forget to give it a like, share with your friends, subscribe to the channel, activate the bell, and I will leave my social media here in case you want to follow me in any of them. So without any further delay, let's go and watch. Let's go. बिस्तर में ना हमारी बीच गुड़िया निकलकर अब ये पंचांग सोने लगा है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि जो इंडियन यहाँ से नासा जाकर काम करते हैं उन्हें अपने देश से लगाव नहीं है? अगर आप भी नासा में होते तो अभी हमारे पास बड़ा सा बंगला, लंबी सी गाड़ी और चौड़े-चौड़े 2-4 बॉडीगार्ड्स होते। हाँ तो कौन मना कर रहा है? वैसे भी तुम्हारी एलिजाबेथ मेरे नासा ज्वाइन करने का इंतजार कर ही रही है। कहो कल ही चलते। Seven, 6, 5, 4, 3, 2. भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिखाया, वो भी उस कीमत में जो कि एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म से भी कम है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिनके महत्वपूर्ण योगदान के बिना ये ऐतिहासिक कारनामा नामुमकिन था, श्री नंबी नारायणन। और उनके साथ बातचीत करेंगे हमारे देश के चहीते सुपरस्टार जो खुद गिज्मो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खास रुचि रखते हैं, सबके प्रिय, सबके दुलारे,
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। बस 2 सेकंड सर। हो गए। अब आप क्या? 2 सेकंड समाप्त हो गए। ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी। 1 सेकंड की अहमियत आपसे बेहतर कौन जानता होगा। बस अभी शुरू करते हैं सर। Keep the tight close only on Khan साहब। उम्मीद करता हूँ कि इस सारी तामझाम का ढंग का नतीजा निकलेगा। साला ये भुट्टा मरवाएगा। सॉरी सर, प्लीज सर, सॉरी। माफ कीजिएगा सर, अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों? मैं यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि जो इस केस में गुनहगार हैं, कम से कम उनका नाम तो सामने आए। हो सकता है कि इस देश को हम जैसे लोगों की परवाह न हो, पर हम तो ऐसे नहीं रह सकते ना कष्ट खान, क्योंकि आज भी मुझे हमारे लोगों की नेकी पर और इस देश की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सर, हम सबको भी आप पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, इसलिए तो हम सब यहाँ पर आए। रोल इट। थैंक यू। हमें भी पता है कि आपके मेंटर, आपके गुरु विक्रम साराभाई को आप पर बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था। तो क्यों नहीं आज की बातचीत उन्हीं से शुरू करते हैं। वाह, तो आज शुरुआत स्कैंडल से नहीं होगी। मेरे सारी जिंदगी के अचीवमेंट को सिर्फ एक स्कैंडल में नहीं लपेटकर मुझ पर रिसर्च करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Ignite! 5, 4, 3, 2, 1. देखो, वर्क हुआ ना? वर्क नहीं हुआ सर, वैक्यूम ऑफ क्लोज था। बेल जार के अंदर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बढ़ाइए वॉल्यूम। So, okay, Giovanni, I stopped it because I wanted to explain about the 3 people. Okay. Okay. The first one is Nambi. Okay. The one who is being interviewed. Then we have, guys, I'm going to read because I made a research in Google. Okay. So the one in the brown shirt is Abdul Kalam. Okay. And then the third one, the one in blue, is Bikram Sarabhai. Okay. Okay. So he was saying that Bikram Sarabhai was like a figure of that and his mentor. Of Nambi. Yeah, Okay. exactly. So now I'm going to read a little bit about them because I made the research and I find it really important so you can get into the context. Okay? Perfect. So, Tell okay, me more. let's start with Bikram Sarabhai. Okay. He's saying he created ISRO and initiated a space program. He even overlooked the Indian nuclear program. Okay. And ISRO is Indian Space Research Organization. Okay, that is ISRO. Now I'm going to tell you about Abdul Kalam. Guys, actually it's a little bit technical for me, so this is why also I'm reading here. Okay. So, well, see, Abdul Kalam, joined defense research and then went to ISRO, okay, and worked for satellite launch vehicles and also successfully created a made in India SLV, that is satellite launch vehicle, okay. Okay. And then joined back the defense research and developed Indian missile named Agni, that means fire. Today, Agni is intercontinental ballistic missile, which can carry nuclear warheads. Oh. Okay. Yeah. After this, Mr. Kalam was given the name Missile Man of India. Further, he headed the nuclear program, which made India a nuclear power. I don't remember if it's Switzerland or Sweden, okay, but the day he visited that country, after all the things that he did, okay, that country decided to make the Science Day in the country, the day that he arrived. Oh, nice. Okay. So now let's go to see about Nambi. Actually, you will know many things from him in the entire movie. This is why I only put a little bit of it. Nambi Narayan created the liquid fuel engine, which helped India to put itself into a space programs. Oh, nice. His engines are used for most the space program of India. Okay, went to Mars in first attempt using his engine,
with little modification, and even the latest landing on moon is done by his engine only. So he created the formula. Yeah, practically. So Like Colonel Sanders. Oh, okay. That's true. That's true. In some way, Like that's true. Colonel Sanders. So this is what I wanted to explain about these characters, so we can continue watching because they are really important. Okay, Really, okay. really Thank you to put me in context. के लिए हम सारे खर्चे उठाने को तैयार भी हैं। वक्त आने से बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं कितनी काबिलियत हम में है। आप ही जानते हैं ये वक्त कब आएगा। सर एक्चुअली मुझे भी पता है। ये लीजिए। Oh. तो जो मैंने सुना है वो सच है। प्रमाण आपके हाथ में। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? सर नंबी को अभी प्रिंसटन जाने की क्या जरूरत है सर? मुझे इसकी जरूरत यहाँ है सर। और ये लिक्विड प्रोपोर्शंस को लेके तुम्हारा जो पागलपन है ना नंबी, ये मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। सर हम अभी तक सॉलिड फ्यूल्स को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, और ये है कि पहली सीढ़ी को छोड़ के सीधे चौथी पर छलांग लगाना चाहते हैं। सर 2 मिनट के लिए ना ये भूल जाते हैं कि मैं कब कहाँ और क्यों जा रहा हूँ। बस मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना सर। हम यहाँ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? आने वाले सालों में इसरो को हम किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? नंबी खबरदार जो अपना प्रवचन फिर से शुरू मैं बच्चे नहीं दे रहा सर, मैं फैक्ट्स कह रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए सर। ये कैसा प्रोटोकॉल है कि पहले हम सॉलिड बनाएंगे, फिर हम लिक्विड पे मास्टरी करेंगे, और फिर अगर जिंदा रहे तो क्रायोजेनिक को छुएंगे, वरना अगली पीढ़ी पे ढकेल देंगे। इन तीनों स्टेजेस को साथ डेवलप करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है सर, क्योंकि जो रॉकेट अंतरिक्ष तक न पहुंचे वो बस एक दिवाली का पटाखा है। सर इन रॉकेट्स के जरिए ना हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। इसके बाद हमें किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है रिसोर्सेज और फंड्स के लिए। सर ये हमारी मकसद होनी चाहिए, क्योंकि आप चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम रॉकेटरी में तो इंडिया को मैं कचरे की चाल नहीं चलने दूंगा। प्रयोजन तो दे ही दिया इसने, और बात तो सही है कलाम। Now, this is what we're going to be discussing today, okay? So this behavioral pattern inside the shock tube is due to the upstream flow of fluid. And so downstream, sir. Excuse me? So this behavioral pattern is only possible when the fluid is flowing downstream in the shock tube. Great. Now we and Esha Shapiro have to learn from an Indian rookie. And your name is? Sir, my name is Nambi Narayanan. So, Nambi, let's say you're right. I'm only human. I can make mistakes. But are you saying Asher Shapiro's textbook is inaccurate? Yes, sir, it's inaccurate. Oh, well, then, why don't you write to Asher Shapiro? Tell him to correct it, according to you. He'll be very glad to hear from you, Numbu. Oh my God. What is... Good morning, sir. My name is Nambi Narayanan. I'm from India. I'm here on a full scholarship for the solid fuel program, but I want to study desperately liquid fuels under you. Sir, I've read all your papers, especially the theory on the relation between thermodynamics and fluid kinematics, and what a lovely piece of work, sir. Sir, I've sent you many applications, but I can understand why you didn't reply to me. Are you serious? How did you find me? Who gave you my address? Russian, Yuri. What? You're wasting your time. My hands are full. What you're asking for is impossible. Goodbye. Sir, you know, for us Indians who have to walk for 2 kilometers to get 3 liters of drinking water and use it between the two of us for 3 days, nothing is quite impossible. What are you doing? Did you just follow me back in? Look at you. You brought the mud into the house. Oh, great. Now just another cleanup job for me. I don't believe Sorry, it. sir. I don't know who you are, but you have some nerve. I really don't have the time. You ought to know I quit going to the campus and stopped taking on students. My life is all about her now, okay? All right, my darling. Have some breakfast, yes? Huh? Get itchy. Let's do it. Let's do it.
Sir, I totally understand and appreciate what you're saying, sir. But please, may I make a suggestion? So you don't have to leave the house at all. I will take care of all your household duties. Indians are very good at that, sir. Sir, I'll do your shopping for you. I'll buy your provisions for you. I will take care of the garden. I'll wash the utensils and the clothes. And on top of that, I'll clean the house. You know, that way you'll get some quality time with ma'am. And in your spare time, you could help me with my thesis, sir. It's a win-win for both of us. And I make the world's best omelets. Please. Please do. Nambi, how'd it go with Professor Krokov? Are you on? I am so on. Oh, that's great. By the way, can you help me with these stability configurations? Sure. No problem. But I need something in return. Can you teach me how to make an omelet? Dear Mr. Nambi Narayanan, thank you very much for your letter. You're the first one to point out the printing and syntax error in my theorem in this version of the book. I'm surprised that it went unnoticed by the professors thus far, but all the same, I assure you it will be corrected. Thank you for pointing it out, and I wish you all the very best in your future endeavors, Mr. Numbu, from Asher Shapiro. You have a lovely day, sir. Mrs. Crocker, get me Eugene Scott. There you are. This ought to be a dream come true for you. I suppose you must be very good, because it's not that often that Crocker recommends a student. Thank you so much, and it's such a pleasure to meet you, Mr. Scott. But I must tell you, Mr. Nambi Narayanan, that you are in for some real hard work and dedication. You commit? नासा का ये जॉब ऑफर तो बहुत खास है। वैसे खास तो तुम्हारा हस्बैंड भी है, बस तुम्हें नहीं पता। My God, जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। Oh my God. क्या? क्या कहती हो? नासा का ऑफर ले लो, यहीं सेटल हो जाएं। जिनका चिराग हाथों में और सोच रही हूँ कि घिसो या नहीं। Hey Nambi, hi Meena. Hi Elizabeth, still with the solids? Yeah, but I can't wait to get into liquids with you. Right. इंडिया ही चलते हैं। हैं? दिवाली पे ये हमें पटाखे नहीं जलाने देंगे, रंगोली नहीं बनाने देंगे पोंगल पे, इंडिया ही बेटर है। अच्छा। इंडिया ही चलते हैं। यही कारण है? मेरी आंखों में देख के कहो, इसीलिए इंडिया चलना है? इंडिया ही बेटर है। इंडिया चलना है? इंडिया ही बेटर। इसी वजह से? ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। So, Giovanni, I actually, sorry, sorry, I didn't abruptly. Actually, I wanted to pause because he was saying that we are losing one great talent from India. Yeah, okay? Nas is buying it. Yeah, and you know, this is the problem. Not only in this case, it's so in India, okay, but this happens with many countries, okay, because US always wants to be like in the top with the best people, and this take the chances of this country to actually grow in the way they need to grow. And this happens a lot with many scientists in India. They give a lot of money, they give a lot of facilities. So it's easy to accept that deal. And saying no to something like that as a personal life is really difficult as well. Yeah, because the money, the opportunities you can give to your family Exactly. also. I So understand that. getting into and saying no and then say no, I'm going to do and put For my my country, talent for yeah. my country. I think this is what is needed to be valued here, and I think this is what is going to happen. So this is why I wanted to point it out. I believe it's going to be easier for Nambi because his wife already told him. So Yeah, that's true. he has a lot of to lose. If the wife has said so, he will follow as a good Indian, right, Indian? Like a good Indian husband. Literally. Yeah, okay, so let's continue watching. Hello? मैं जानता हूँ नंबी कि ये ऑफर इतना बड़ा है कि कोई भी इंडियन साइंटिस्ट इसे आसानी से ठुकरा नहीं सकता। This is NASA, Mr. Nambi. The most coveted playground for any scientist worth his salt. I trust you understand what an honor this is. सच कहूँ तो नंबी, जो पैसे वो तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, हम तो उसके सामने तुम्हें चिल्लड़ भी नहीं दे पाएंगे। And doesn't stop with a generous paycheck. There's a high-end vehicle, a housing allowance, and an annual paid vacation for you and the family. तुम एक extraordinary scientist हो नंबी।
और जो भी फैसला तुम लोगे, I'll respect that. The presidential offer will be the final formality, and you should have it in 2 days. Nobody ever refuses the president, Mr. Nambi. Hard. Take your time. फैसला मुश्किल है. ये फैसला मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं था. वो कह रही थी कि मैं प्रेसिडेंशियल ऑफर मना नहीं कर सकता, तो मैंने उन्हें मना कर दिया. Visionary that man was. That man gave India. He talked about Tata, right? 3 years. And when I was a colonel in the city, I got to meet Jamshed Tata. I mean, what This a is the Tata? visionary that man was. Wow. That man gave India her first computer You know center Tata? 3 years ago. What? Tata. I'm so impressed that you know about The all guy this. they mentioned Tata. Most people in India are not aware. What? They mentioned a guy Tata. Yeah. Do you know who's Tata? No, I don't know who's Tata. Tata is right now is one. BTS. Right now is one of the biggest companies in India. They own everything. Imagine that the optical fiber that comes from US, that connects US with Latin America, Okay. it's from Tata only. Ah. Like, imagine how big it is. If you enter to see all the things they do, they have the biggest and most expensive hotels in the entire world. They have they make cars as well. They are even having the Starbucks Alliance in India. So this is nothing actually. That was our mistake back then. Breaking you up into India, Pakistan. What do you know? The domino effect goes on. Now you've got Bangladesh. Oh, I'm sorry. Am I hogging the conversation? Yes, my love, you are. Sorry, India does that to him. Oh, there's no need for apologies, Mrs. Cleaver. I think it's quite a compliment. You're very sweet, sir. Okay. Okay then. Enough about me. Why are you interested in the Rolls-Royce hydraulic systems? Sir, India is at a very nascent stage of rocketry and we can't afford the kind of technology we need. We've heard so much about your equipment and the plant at the Rolls-Royce hydraulic factory. I just had to see it for myself. Sir, I was in France just a month ago and was just content reading about the hydraulic systems. And now, I'm here, seeing the testing of fluids with such complex system of gauges. This is incredible. As is this food. Thank you so much for it. You're very kind. We really wished you could have stayed for New Year. Food and extra day stay are luxuries that ISRO can ill afford right now. So how long was your tenure in India? Well, it was long enough for the imperialist guilt to weigh heavy upon my heart. I've often wished there was something I could do in my own small way to make amends. I don't know about then, but I do know of a way now. Colonel Cleaver, it's a well-known fact that European rocketry program is on a slow burn because the US is undertaking all your rocketry responsibilities. Which also means that the hydraulic plant and all the equipment I saw today will all be rendered useless and dysfunctional because you'll have to move the plant. And what a tragedy that'll be. But what is a setback for you could transcend 10 years of research for us in India. So I'm going to make an outrageous request. Give us the hydraulic plant and all the equipment. I know as a nation we can't afford to pay you a dime, but we'll forever be indebted to you. Wow. Oh my God. You do know what you're asking for is £400 million worth of equipment. Even as I said it, I realized how ridiculous I sounded. I'm so sorry. Please forget I asked. On the other hand, darling, he isn't asking for the Kohinoor. So you listen that she made a joke about the Kohinoor. Oh, darling, but he's not asking at least the Kohinoor. What happened is that the Kohinoor is a precious stone, like a diamond, okay, that was taken from India when it was colonized. And it's the diamond who is in the crown of the Queen of England. Okay. Okay, in this case, the Queen is not more, but it's in the crown. Yeah. Okay, so this is why she's saying this as a joke, because this Kohinoor has been asked by India to give it back. And the Britishers are, no, we won't. So.
This is so spectacular. I've never seen something like this. It is indeed an outrageous request. I'm surprised you had the audacity to ask. Though it's not a remotely worthy compensation, Nambi, it would be an honor to give you all the equipment for free, as is in with my power to grant. Now, what's not within my power is bearing the cost of shipping it to India. Much though I'd like to oblige, you must make those arrangements. Oh, wow. My dear boy. I don't know what to say. This is spectacular. This is wonderful news. Oh, save it, Nambi. It was probably built from money procured from India. You know, this is such wonderful news. I can't wait to tell Vikram sir about it. Why don't you give him a call? Give the old man a ring right now. Yeah, I think it's very late. I'm leaving by the early morning flight. I'd like to see his face in person when I tell him this wonderful news. But thank you so much. Thank you. 400 million pound के equipment free में. सर छोटा करने की आदत नहीं है. Wow. On a serious note, you know, Nambi, ये जो तुम्हारा पागलपन है ना, ये जिद, ये अकड़, ये बेचैनी, तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं. For arrival. मैं समझ सकता हूँ कि विक्रम साराभाई की मौत का सदमा आपको बहुत हुआ होगा. एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता सर. सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ. नंबी, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा. हाँ, मैं जानता हूँ ये सब ड्रामा तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए. आज क्या मांगने आए हो? What do you want? सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं. सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है. नंबी, गरीबी में आटा गीला करने की बात मत करो. तुम जानते हो हमारे पास बजट की कमी है. सर, बजट की कमी हो सकती है, पर दिमाग की तो नहीं ना. अब वक्त आ गया कि हमारा दिमाग बेचकर हम अपनी बजट की कमी पूरा करें. मतलब ये कि एसीबी फ्रांस अपने आर्यन रॉकेट्स के लिए वाइकिंग लिक्विड फ्यूल इंजन तैयार कर रहा है. इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए उन्हें सैकड़ों साइंटिस्ट और मैन ईयर्स की ज़रूरत है. हम उन्हें अपना काबिल दिमाग देंगे और बदले में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी उनसे सीख लेंगे. अब बाटा. नंबी, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर फ्रांस हमारा ससुराल तो है नहीं जो घर बुलाकर घी खिलाएगा. वो नहीं मानेंगे. सर, वो नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मान गए तो मैं कौन होता हूँ तुम्हारे रास्ते में आने वाला. मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ. सर, अपना आशीर्वाद ना इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल दीजिए. मैंने फ्रेंच वालों से बात कर ली है. वी हैव अ डील. नंबी, बड़ी तीखी चीज हो तुम. दिस इज अ ब्लडी गुड डील. अच्छा बताओ, तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? 52 साइंटिस्ट जो फ्रेंच सीखकर 3 साल अपनी फैमिली के साथ फ्रांस में रहने के लिए तैयार हों. क्या बात है गाइस, फ्रेंच सीखने के लिए 8 महीने, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है. ओ यार नंबी, इंग्लिश सीखने में 8 साल लग गए यार, फ्रेंच कहाँ सीखेंगे हम? अच्छा चलिए ये बताइए कि फ्रेंच में गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं? सही है. अब मुझे ये बताइए कि फ्रेंच में हम ये कैसे कहेंगे कि फ्रांस में अगर हम में से किसी ने भी एक शब्द भी फ्रेंच में कहा तो नौकरी तो जाएगी, साथ में बगैर तनख्वाह के इंडिया वापस भेज दिए जाओगे. जी हाँ, फ्रांस में हम अपने आंख और कान खोले रखेंगे लेकिन जुबान बंद. किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हमें फ्रेंच आती है. जेंटलमैन, ये मिशन हमें जितना दिखता है उससे कई गुना बड़ा है. उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ब्रीफिंग पढ़ ली होगी. हमें अपना लिक्विड इंजन बनाने के लिए उनके इंजन की बनावट और बारीकियों को समझना होगा. इसीलिए हम आप सबको हर एक डिपार्टमेंट में रोटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे. और जब हम वर्णन जाएंगे और इनकी वाइकिंग इंजन पर काम करेंगे तो ये जो कहते हैं उसे हम ध्यान से सुनेंगे और ये जो हमसे नहीं कहते उसे और भी ध्यान से समझेंगे. याद रखिए, वर्णन फ्रांस का एक छोटा सा कस्बा है. Not for long. Just here to observe, assist if necessary. Are you assisting? Good. What were we saying about the stability margin? Michelle, I was saying that the upper stability margin of the Viking engine is a little too low. A little bit of change in the operating pressure and the engine will vibrate or worse still totally explode. No, that's not possible. Oh, actually it's quite possible because you're assuming that your fuel is as pure as the French wine, but if it turns out to be a cheap American knockoff, the engine will be drunk before you can say santé.
Is that your Indian sense of humor? What if I prove it to you? Shall we begin? Yes. Varam, start kar. The engine. Hey, but an engine like this should be able to withstand this easily, huh? Without a reasonable stability margin, you're vulnerable to high-risk failures, guys. Varam, some more. Nambi! You see my point? Yes! Yes, yes. Stop the engine. If that doesn't explode, it will cost us £1 million. It won't explode now. Another 0.2 bars and then the fireworks will begin. Increase it. Stop! Stop the engine, please! Varam. Stop. Michelle, I've done this before. The Aryan deserves a much more reliable engine. I know that you've placed orders for the mass production of the spare parts. But if I were you, I'd think twice before putting my name on those contracts. But the rest is up to you. Hey, come on, guys, let's go. I know you long enough to know that you are obviously doing this for a reason, but I don't know what it is. So I have to fall in the trap and ask you, can you fix this? God's sake, Nambi. This is yes, and this is no. What does this mean? Oh, merci, mon Dieu. Enfin, quelqu'un qui le demande. Yes, I think I can do it. But I need all the information and data on the test failures to be able to do that. The one place where all the relevant information can be given to you is the RCD. Would you be able to make time for those meetings? Yes, I guess I can do that. But, Michelle, my schedule is very packed, very busy. We'll work around your schedule. What happened, Param? I think what you can do is rotate all my men in all the departments so that they can fill in for me when I'm at the RCD. Easily done. The committee meets tomorrow at 9. But Nami, all I have is about 60 days to fix this. Can you do it? Yes, I can try to fix it. मान गए भाई 100 सोनार की 1 नंबी की थैंक यू आरसीडी में तो घुस गए लेकिन इस इंजन के स्टेबिलिटी मार्जिन का क्या करोगे प्रोफेसर क्रॉको जिंदाबाद मतलब ओ तेरी इसको ऑलरेडी पता है हाँ प्रॉब्लम ऑरिफिस में है इंजेक्टर पैसेज का डायमीटर बढ़ा दो स्टेबिलिटी मार्जिन अपने आप छलांग मारेगी भाई नंबी तो कमाल करती है जल्दी जा नहीं तो ये फट जाएगा गवर्नर खुद एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था सर अब तो समझ रहे हो नहीं तुम्हारा काम यहाँ कितना जरूरी है हाँ सर द एंटायर मिशन डिपेंड्स ऑन यू घर पे सब कैसे हो नहीं मस्त है सर बेटा थोड़ा बीमार था अयो पर अब ठीक हो गया सर गुड मेरी बीवी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं विदेश जा रहा हूँ बोल रही थी जब तुम लोगों का रिंगा रिंगा रॉकेट खेल कर हो जाए तो 2 लीटर दूध ले आना सर अब अपना फैसला सुनाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ अगर उन्हीं अपना काम यहाँ अधूरा छोड़कर चले जाएंगे तो 52 साइंटिस्ट की बरसों की मेहनत इसरो के लगाए हुए पैसे और रिसोर्सेज सब बर्बाद हो जाएंगे हमें इस मुकाम तक फिर से पहुंचने के लिए कई साल लग जाएंगे बस आप कुछ मत बोलिए मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए क्योंकि मैं अपनी बेटी से ये नहीं पूछ पाऊंगा अब मैं बस उसका ख्याल रख सकता हूँ और क्या अब कीजिए आपको जो करना है Oh, so hard. It's very difficult decision. Action.
दीजिए सर, मैं ले लेता हूँ। अरे कोई बात। थैंक यू वेरी मच नंबी सर। Oh my God, he is going जब भी to मैं अपनी forget. फैमिली के लिए गिफ्ट या बच्चे के लिए खिलौना खरीदता हूँ, आप ही पैसे देते हैं। एक दो बार ठीक है सर, पर बार बार मुझे थोड़ा अजीब लगता है सर। कोई बात नहीं मेरे भाई, इसके बारे में से तो मत घबरा, बस तू बस अपना काम खत्म कर ले, मुझे काफी है। हाँ सर। Oh my God, this is hard. 15 दिन से जानते थे तुम, मुझे नहीं बताया। मैं अपने बेटे के लिए कपड़े और खिलौने खरीद रहा था, तो साथ में था ना, और उसके लिए पैसे भी दे दिए। तब इतना पीर है, तू तो हैवान से भी बदतर निकला। मैंने ये सब कुछ सोच समझ के ही किया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था मेरे भाई। तुम अगर जल्दी घर लौट भी जाते तुम वहां कुछ नहीं बदल पाते, पर यहां सब कुछ बर्बाद हो जाता। यहां सब कुछ इस बात पर टिका हुआ था कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, और बदकिस्मती से तुम्हारी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी बन गई। मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे। पर सच तो यह मेरे भाई कि कल को अगर तुम मेरी जगह हुए तो मैं यही चाहूंगा कि तुम भी मेरे साथ वही करो क्या हुआ? जो मैंने तुम्हारे साथ किया। बोलिए, मिल गई तसल्ली? नहीं, मैं तसल्ली करूंगी। दोबारा कभी मिलना मत। ऐसा नहीं करना। मैंने तुमसे कोई एडवाइस पूछा, और अगर गलती से पूछ भी लूँ ना तो मत देना, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, और ना ही मैं कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं, बस वो काम पूरा कीजिए, वही काफ़ी है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी निकल जाएं, मैं तुम्हारे बगैर भी ये मिशन पूरा कर सकता हूँ। चलिए अब काम पे लगते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। कमाल है नबी साहब, आपको देखकर ऐसे लगता नहीं कि आप इतने बेरहम हो सकते। हालांकि आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ आपने जो किया वो करना जरूरी था। खैर, इतनी मेहनत लगन त्याग के बावजूद भी भारत को अपना पहला लिक्विड इंजन बनाने में काफी समय लग गया नहीं? लगभग 8 साल। फ्रांस में जाकर वहाँ के साइंटिस्ट के साथ डिटेल में ट्रेनिंग लेने के बावजूद हमारे पास हमारे खुद के लिक्विड इंजन बनाने के लिए फंड्स नहीं थे। आखिरकार 1 साल के बाद उन्होंने एक इंजन बनाने की परमिशन दी और 1 करोड़ सैंक्शन हुआ। मैंने उस इंजन को 60 लाख रुपए में ही बना डाला। इट वॉज अ डू और डाई सिचुएशन। पर उस इंजन को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट स्टैंड की जरूरत थी उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए। हमारे पास कोई चारा नहीं था, मजबूरन उस इंजन को लेकर हमें दोबारा फ्रांस जाना पड़ा। The precious is good. All the best of luck, Nangi. Thanks, Michelle. Combien tu paries que toute cette opération va foirer et se mettre à brûler? C'est vrai? La question à combien de secondes? Paris? Paris, 38 secondes. यार बस साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कैसे भी इंजन फायर हो जाए। बाइकिंग 135 सेकंड चलता है, हमारा कम से कम 90 सेकंड तो चलना चाहिए। लाज रख ले हमारी। 135 सेकंड, बस 135 सेकंड तक खींच लो,
मैं खुद अपने हाथों से 135 किलो देसी घी के लड्डू बनवाऊंगा और सब में बांटूंगा। 135 सेकंड वाहिगुरु। 135 All station, this is control. Weather condition okay. Clear to fire. Roger. Copy that. 10, 9. Section 107, 108, 100.